pity that it came to this. I think that the idea of expanding what the building showcases to accommodate other prime ministers is an unexceptionable idea. In fact, it's good to encourage all the students, children, and general members of the public to be aware of the contributions of all prime ministers. I have no difficulty with that. But in the process, it's rather petty to take away the name of the first prime minister who led the interim government, who was prime minister upon independence, who was so far the longest serving prime minister at 17 years. You could have continued calling it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum and Library. You don't have to refuse to add other prime ministers. You can put that, but also keep the original name. This pettiness is unfortunate, and it shows a certain bitterness towards our own historical past, which I believe is not worthy of a government that has such a good majority, so much confidence in themselves. They should at least show that big-heartedness that you expect that comes with a big majority. You know, our first prime minister had said that he's not the Pradhan Mantri, he's the Pradhan Sevak. A phrase that was echoed 13 prime ministers later by Mr. Narendra Modi. He could have also paid Nehruji the tribute of keeping his name in a building where he had lived. This was also the house of the Prime Minister. Before this whole complex in Racecourse Road or Lok Kalyan Marg was built, Nehruji lived there. And to continue to name the place after such a giant of our history who also lived there would have been a very simple thing to do. And I think it's become an example of a certain pettiness that I wish we didn't have in our politics. देखिए, ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूज़ियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना कर रहा है? किसी चीज़ को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी। और यही हम लोग बार बार कह रहे हैं, अब बनाइए ना म्यूज़ियम बनाने में क्या, किसी पे भी बनाइए। मैंने भी वो म्यूज़ियम देखा है, उसमें आप आश्चर्य के बाद देखिएगा कि खैर वो तो दूसरी बात है कि सरकार को पता ही नहीं है जवाहरलाल नेहरू की क्या उपलब्धियां रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो शायद ऐसा लगता है कि अगर जितना काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उससे शायद ज़्यादा काम देवेगौड़ा ने अपने 16-17 महीनों में कर दिया होगा, या बाकी प्रधानमंत्रियों ने कर दिया होगा, बाकी के कार्यकालों में कर दिया होगा। आप एक बार उसको एग्जीबिशन को देखिए तो फिर चलो भाई आपने एग्जीबिशन बनाई तो उसको भी तो किसी तथ्य पे आधारित करिए। तो मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्रधानमंत्रियों पे बनाओ, सरकार का मंशा, सरकार किसी पे भी प्रदर्शनी बनाए, किसी पे भी संस्था बनाए, लेकिन एक संस्था जो एक उद्देश्य के साथ बनाई गई है, ठीक है, उस संस्था को अगर आप बदलते हैं तो फिर सीधी बात है उसके अंदर आपका या तो द्वेष दिखता है या उसके प्रति, क्योंकि उसका नाम, उसका काम तो आप दबा नहीं पाए। तो सरकार के इस प्रभाव से आप एक पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के एक तरीके से माने तो इस सदी के सबसे बड़े 2 या 3 नेताओं में जिनका नाम गिना जाता है, उसको दबाने की या छुपाने की कोशिश आपकी की गई। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार हैं। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। हाँ, उनकी तो सोच क्या है, बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो जब राग दरबारी बजता है
दरबारियों के द्वारा तो बेसुरा होता है। This shows the mindset of the Congress party. Today, the Prime Minister's Museum is going to showcase the achievements of all the Prime Ministers of the country. Should the Prime Ministers who have served this country, including Narasimha Rao ji, Lal Bahadur Shastri ji, Deve Gowda ji, Inder Kumar Gujral ji, Charan Singh ji, VP Singh ji, their achievements should not be showcased? And if all the Prime Minister's achievements are being showcased in that space, in that library, in that museum, then how can the institution be named after just one family or one person? And to say that Nehruji's legacy is being destroyed and demolished, is Nehruji's legacy so frivolous and so trivial that if one institution is named after generically the Prime Ministers of India, Nehruji's legacy will be destroyed? There are hundreds and hundreds of institutions, awards, schemes, schools, roads, which are still named after the first family, after Jawaharlal Nehru ji, after Indira ji, after Rajiv ji. So does that mean that their legacy will only remain if everything is named after one family?